हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ रीट 2021 के ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ईवीएस के चैप्टर नंबर 3 इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट ईवीएस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, chemosynthetic bacteria is one type of, I repeat, chemosynthetic bacteria is one type of, यानी chemosynthetic bacteria कौन से किस्म का टाइप है। तो chemosynthetic bacteria it is a type of autotrophic, ओके, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। तो chemosynthetic bacteria is one type of autotrophic. Next question number, quantity of organism living in the deepest area of the sea is, okay, I repeat, quantity of organism living in the deepest area of the sea is, option number 1 medium, option number B nothing, ऑप्शन नंबर डी सी लॉ, ऑप्शन नंबर डी एक्सेसिव। तो क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि डीपेस्ट सी एरिया में रहता है, इट इज़ ऑल अबाउट नथिंग। वहाँ पे कुछ नहीं के बराबर मिलता है डीपेस्ट सी में, वेयर द सन लाइट नॉट रीचिंग, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस ऑफ बैक्टीरिया इन द हाई अबव एटमोसफेयर, ओके, ट्रेस ऑफ बैक्टीरिया इन द हाई अबव एटमोसफेयर, यानी हाई अबव बहुत ऊंचे एटमोसफेयर पे बैक्टीरिया का ट्रेस क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज फाउंड, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट फाउंड, ऑप्शन नंबर सी इज अंडर सर्च, ऑप्शन नंबर डी इज नॉट पॉसिबल। तो हाई अबव एटमोसफेयर पे एटलीस्ट बैक्टीरिया not found, okay, bacteria are not found in high above atmosphere. Here the option is high above atmosphere bacteria is found. Next example of decomposer is, इन चारों में से कौन एक decomposers का एग्जाम्पल है। डिकम्पोज दैट मीन्स सड़ा गला चीज। तो ऑप्शन नंबर 1 फंगस, बी वल्चर, ऑप्शन नंबर सी क्रो कौवा, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन प्लांट्स। तो हियर द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर इज फंगस, ओके। फंगस क्या है, एक सड़ा गला डिकम्पोजर है। ग्रीन प्लांट इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर एंड वल्चर इट इज कॉल्ड द टर्शियरी कंज्यूमर, क्रो इट ऑल्सो अ कंज्यूमर and it is also called the omnivorous. Next questions, what is the type of ecosystem? What is the type of ecosystem? The ecosystem is a type of free, okay, not in engaged. The option is A free, okay. Stagnant is stagnant नहीं है, half free भी नहीं है, and none of these. तो ecosystem is type of free ecosystem in natural places. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बायोम्स आर देयर इन द इकोसिस्टम्स, यानी पूरे वर्ल्ड में कितने बायोम्स हैं, ओके। इकोसिस्टम में टोटल कितने बायोम्स है। बायोम्स अ लार्ज एरिया विच इज अ लार्ज इकोसिस्टम इन आवर अर्थ दैट इज फाउंड इन ए नेचुरल प्लेस, इट इज कॉल्ड द बायोम्स। तो बायोम इट इज मोर देन वन, यानी पूरे अर्थ पे एक से ज़्यादा बायोम्स है, ओके। Next questions, the type of natural habitat of xerophyte, okay, the type of natural habitat of xerophyte is, यानी xerophyte किस किस्म का natural habitat है। तो natural habitat xerophyte it is about dry, xerophyte that means ऐसा प्लांट जो कि सूखे जमीन पे होता है, उसको कहते हैं xerophyte. Mostly it is found in the deserts region, okay, that is cactus, cacti, okay, babool and etc. तो xerophytes it is related about the dry. Next questions, which class of animal do bear and rat belongs to, okay, bear भालू और चूहा किस क्लास ऑफ एनिमल से बिलोंग करते हैं।
Okay, option is carnivorous, option B is omnivorous, option C is autotrophic, option D is decomposer. Here the right answer is option number B, omnivorous. Okay, चूहा और बियर यानी भालू दोनों omnivorous क्लास से रिलेटेड करते हैं. एंड मैन आर ऑल्सो omnivorous, crow is also omnivorous, and green plants it is called the producers, and cow, deer it is the herbivorous. Okay, next questions. The animal who depend on level of food are called. Okay, I repeat, the animal who depend on the levels of the food are called. ऐसा एनिमल जो कि फूड के लेवल पे डिपेंड है उसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द omnivorous. Okay, okay, producers it is called the green plants. Okay, then herbivorous and omnivorous, these are these type of animals which is depend on the producers or herbivorous. तो omnivorous को बोलते हैं डिपेंडेंट लेवल ऑफ फूड. नेक्स्ट, इन इकोसिस्टम सॉरी in ecosystem what is the positions of the producers according to the nutrition level. Okay, ecosystem में producers का क्या लेवल है, न्यूट्रिशंस का लेवल है इकोसिस्टम में, प्रोड्यूसर का क्या लेवल है? तो इट इज एज अ फूड. ओके, इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स का जो लेवल एज अ फूड, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन प्लांट्स. Next questions. What is the ecosystem of a static reservoir of water known as? Okay, रिजर्वियर वाटर जहाँ पे पानी स्टोर होता है वो किस किस्म के इकोसिस्टम से बिलोंग करता है या जाना जाता है? इट इज कॉल्ड लैंटिक. वेयर द वाटर्स आर stagnant it is called Atlantic, and where the water are follow it is the best example of river, it is called Lotic. Okay, there are two type of water are found on the facing of the earth, Lotic and Lentic. Next questions, the ecosystem of river is called, it is the Lotic. Okay, next questions, what is the following is not included in ecosystem? इन चारों में से कौन एक इकोसिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है? Okay, option number one, energy constituent, option number B, inorganic elements, option number C, environmental science, option number D, organic elements. तो here the right answer is option number C, environmental science. environmental science जो कि इकोसिस्टम में इंक्लूड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑन विच द वर्क ऑफ इकोसिस्टम डज डिपेंड, यानी इकोसिस्टम का काम किस पे डिपेंड है? Option number one, system of energy follow. Option number B, nature of lands. Option number C, state of climate. Option number D, elements. तो ecosystem it is totally depends on system of the energy follow. ecosystem जो कि energy follow के system को proceed यानी follow करता है. Next questions, in a trophic level the quantity of living plants and animals is called. ट्रॉपिक लेवल पे एनिमल लिविंग प्लांट या एनिमल्स का क्या क्या क्वांटिटी है? तो इट इज कॉल्ड बायोमास. बायोमास दैट मीन इट इज बायो, इट इज कॉल्ड द लाइफ, एंड मास ए लार्ज एरिया, लाइफ विच इज एक्सीड और एक्सटेंड इन ए लार्ज एरिया, इट इज कॉल्ड बायोमास. ओके, ट्रॉपिक लेवल पे लिविंग प्लांट एनिमल्स का जो क्वांटिटी है एज ए बायोमास. Next questions, ecological area formed with living plants and animals are called. Okay, ecological area formed with living plants animals, यानी कोई भी एक बड़ा लैंड जो कि लिविंग प्लांट्स हो एनिमल्स हो उस एरिया को कहते हैं, इट इज कॉल्ड बायोम्स. नेक्स्ट, द वर्ड बायोस्फीयर इज यूज्ड टू डिनोट द स्फीयर ऑफ द अर्थ वेयर द लाइफ एग्जिस्ट इन. बायोस्फीयर किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं बायोस्फीयर? Biosphere it is called option number C, lithosphere, where it is related to the land area. Hydrosphere, water. Atmosphere, it is related to air. Okay, gas. So where three things are found, it is called the biosphere, where the life is exist in our earth. These three things are found, that is life. Here is life is possible. Next questions, the sphere in earth where the life exists with soil, water and air, it is called biosphere. Okay, I repeat, tiny plants and animals living in an aquatic environment are called, यानी environment में छोटे छोटे animals और plants को क्या कहते हैं? It is called the plankton. Okay,
पानी के लेयर पे छोटा छोटा जो प्लांट्स तैरते रहते हैं उसको कहते हैं प्लैंक्टन्स. इफ द प्लैंक्टन्स विच इज बिलोंग्स टू अ small insect, it is called the zooplankton. Okay, and planktons which is belongs to a small tiny animals, it is called the phytoplanktons. Okay, there are two types of planktons. Next questions, the balance of the constituent factor through which balance of the ecosystem take place are. I repeat, the balance of constituent factor through which balance of ecosystem take place are. एन इकोसिस्टम जो बैलेंस को मेंटेन किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर, वो तीन कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर कौन कौन सा है? हियर द ऑप्शन नंबर सी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड decomposers. Producer green plants, consumer those who are used, and after sometimes the consumers are died and it will become the decomposers. So these are the three main things which is the constituent factor of the ecosystem. Next question is, in ecosystem that take place in organic element is called. Okay, so here the two options. No, here the option number C is right, rotations of the materials and energy. Okay, is ecosystem that take place in inorganic elements is option number C is right, rotations of materials and energy. Next question is, a food chain is formed with. A food chain कैसे बनता है? The food chain, option number 1 is the right answer. Food chain is formed by the producers, primary consumers and carnivores. Okay, next question is, carnivores are mainly what? Carnivores क्या mainly है? It is carnivores, it is called the secondary consumer. Okay, carnivores are secondary consumers. Man in a food chain, man का positions क्या है food chain में? What are the positions of the man in the food chain? So here the man position in food chain, it is the primary, tertiary, consumer. Okay, man's in ecosystem, primary, tertiary, consumer. Next questions, in same trophic level there remain. Okay, same trophic level पे there remain deer and cow. Okay, यानी कौन सा टॉपिक लेवल में दो चीज ऐसा मेन सेम रिलेटेड है? इट इज तो काउ एंड डियर. ओके, एंड दो दीज टू एनिमल्स विच इज द हर्बिवोरस. ओके, इकोसिस्टम क्रिएट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम क्रिएट, इकोसिस्टम क्या क्रिएट करता है? इकोसिस्टम क्रिएट फूड वेब एंड फूड चेन. ओके, a chain system of the food of the different types of animals. Okay, it is called the food chain, and food web, a large network of the food which are the animals are taking each other. Next question is, driving force of the ecosystem. Ecosystem का driving force क्या है? The ecosystem का driving force, it is the solar energy. Okay, totally ecosystem is based on solar energy. Okay, sunlight. Next question is, on which level from earth did NASA discover bacteria? Okay, according to NASA, which level of the earth, and what is the meter or kilometer of the earth the bacteria are found according to NASA? Okay, it is about the 15 kilometer. Okay, 15 kilometer from the facing of the earth. Next, chemosynthetic bacteria is, it is also called the autotrophic. Ecology was first proposed by, इकोलॉजी फर्स्ट टाइम कौन प्रपोज निकाला था ये वर्ड? अर्नेस्ट हैकल. ओके, इन 1865. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवरऑल बेस्ट पिक्चर ऑफ द नेचर ऑफ एन इकोसिस्टम इज प्रेजेंटेड बाय. ओके, एनर्जी पिरामिड. यानी इकोसिस्टम का बेस्ट पिक्चर कहाँ पे समझ में आता है? तो एनर्जी पिरामिड के ऊपर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स द रेडिएंट एनर्जी इज स्टोर्ड बाय. तो हेयर द ऑप्शन इज 1. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है रेडिएंट एनर्जी रिस्टोर, जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम रेडिएंट मात्रा में स्टोर होता है. इट इज ऑप्शन नंबर 1, photosynthetic and chemosynthetic activities of the food plant producers. Next question is, select perfect primary consumer. Okay, सबसे बेस्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है? लो, तो deer and goat. It is also called herbivorous animals. Okay, perfect primary consumers are deer and goat. Next questions, which characteristics of the following is perfect for food chain? इसमें से कौन सा
सबसे परफेक्ट है फूड चेन के लिए। Here the right option is option number D. Number of the organisms decrease gradually from the lower level to the higher level in the food chain. यानी जैसे फूड पिरामिड में जैसे जैसे हम लोग लो लेवल पे जाएंगे तो नंबर ऑफ द एनर्जीज डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ सीन अंडर, यानी मैक्सिमम जो लाइफ सीन देखा जा सकता है कितने मीटर के अंदर, सी लेवल में, तो इट इज अबाउट 200 मीटर्स। ओके, 200 मीटर्स के अंदर लाइफ आर एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर पासिस थ्रू, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में वाटर कैसे पासिस होता है, तो इट इज वाटर पासिस फ्रॉम द एटमोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द स्पीसीज इन द सिंगल कम्युनिटी इट इज कॉल्ड। ओके, नंबर ऑफ द स्पीसीज इन सिंगल कम्युनिटी, इसको क्या कहते हैं, इट इज अल्फा डाइवर्सिटी इंडिसेस, इसको कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी इंडिसेस। ओके, तो फ्रेंड्स ये था ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके, जो कि रीट 2021 के मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।